Hello friends, in this session we will discuss about the material variances in the chapter of standard costing. The question arised is what about variances? That means what do you mean by variance? Variance का मतलब क्या? So friends, variance is the difference between the standard data and actual data. Standard data and actual data, that means what is the standard data? So friends, whenever the manufacturer will start the manufacturing, before that he is deciding some fixed or expected data, that means how much material they are going to use and at which price this material will be available. ये सारी चीज़ें जो decide करते हैं इसको हम standard data कहते हैं और जब वो प्रोडक्शन शुरू करता है then he will get the actual data, that how much actually they have used the material, at which price they have purchased the material, right? So this is called actual data. So friends, अगर उसके standard data, that means उसके decided data और उसके actual data में अगर कोई change आता है, so उस change को हम लोग variance कहते हैं. And in this session we will discuss about the material variances. So friends, variances बहुत टाइप के हैं. Material variances होते हैं, labor variances होते हैं. Labor में change आता है, then fixed overhead में change होता है, variable overhead में change होता है, sales जो उसने decide किया वो actual sales में change होता है. ये सारे variances हम find कर सकते हैं. But friends, in this session we will discuss only about the material variances. So let's start that material variances. Yes friends, so in this material variances, we can find 6 types of variances. In these 6 types of variances, friends, the first one is called material cost variance. This is the main variance, friends. This is the main variance. That means जब production कर रहे हैं, right? तो कितना material use होगा, मतलब कितने रुपए का खर्चा होगा about the material, right? उसका standard data decide किया जाता है. फिर actually material के पीछे कितना खर्चा हुआ वो find करते हैं और उन दोनों के बीच में अगर जो difference आता है वो material cost variance होता है. Now this cost variance can be divided in 2 parts. That means if we'll analyze this material cost variance, right, we can find that these variance is arise due to the change in prices of material and usage of that material. So this cost variance can be divided in 2 parts, that is material price variance and the second one is material usage variance. Now friends, this usage variance can also be analyzed, that why this usage is arised. So this usage variance can be divided in 3 parts, that is called material mix variance, then material sub-usage variance, and material yield variance. So let's start to study the formula of this variances, friends. The formula for material cost variance is standard quantity multiplied by standard price.
फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, सो विल गेट द स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, that to be multiplied with actual price. This is your actual cost of material. So standard cost minus actual cost, that is called material cost variance. Now friends, the another formula for this is material price variance. मतलब अगर आपकी डिसाइडेड प्राइस और एक्चुअल परचेज प्राइस में चेंज है, सो मटेरियल प्राइस वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं. एंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला, दैट इज एक्चुअल क्वांटिटी इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस. द नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर दिस इज material usage variance. Thus the formula for material usage variance is standard price in bracket standard quantity minus actual quantity. So SP in bracket SQ minus AQ. Then the next one is material mix variance. फ्रेंड्स, मटेरियल मिक्स वेरिएंस के हमारे पास दो फॉर्मूला है. मिक्स वेरिएंस कब अराइज होता है? मिक्स वेरिएंस अराइज होता है जब रॉ मटेरियल में एक से ज़्यादा रॉ मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं. मतलब जब रॉ मटेरियल का मिक्सचर होता है, जैसे कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर हम लोग ए और बी दो टाइप का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, राइट, तो वो मिक्सचर है रॉ मटेरियल का, और इस मिक्सचर में जब चेंज आता है तो मिक्स वेरिएंस अराइज होता है. मिक्स वेरिएंस हम लोग दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं. मतलब कि हमने जो मिक्सचर का टोटल डिसाइड किया था और एक्चुअल का जो टोटल आया, अगर वो सेम है तो एक फॉर्मूला यूज होता है. मतलब हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट व्हेन TSQ, that is total standard quantity, and TAQ, which is total actual quantity, are same. फ्रेंड्स, अगर ये दोनों सेम है, राइट, तो मटेरियल मिक्स का फॉर्मूला वो यूसेज के जैसा ही बनेगा. मतलब इसका फॉर्मूला बनेगा स्टैंडर्ड प्राइस इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी. बट अगर मिक्सचर दोनों का अलग हुआ, मतलब टोटल अलग हुआ, जैसे हमने ए और बी का डिसाइड किया था कि 500 क्वांटिटी जाएगा और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो 600 क्वांटिटी गया, राइट, तो दोनों में चेंज आया, तो उस टाइम पे मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. सो विल राइट दैट व्हेन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड टोटल एक्चुअल क्वांटिटी आर नॉट सेम. The formula for that is SP, which is standard price, in bracket RSQ minus AQ. This RSQ that is revised standard quantity. मतलब जब टोटल चेंज है तो हमें हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को रिवाइज करना पड़ेगा. सो विल गेट रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड विल यूज दैट इन दिस फॉर्मूला. मिक्स वेरिएंस के बाद फ्रॉम आएगा मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस. मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस इन ब्रैकेट SQ माइनस RSQ. मतलब यहां पे हम लोग हमारे स्टैंडर्ड को और रिवाइज स्टैंडर्ड को कंपेयर करेंगे, and what the difference we will get is called our material sub-usage variance, right? And the last formula for that is material yield variance. Friends, material yield variance का formula, material yield variance that means our output variance. हमने जो production decide किया था उसमें और actual production में जब change आया तो इसको find कर सकेंगे, that is standard cost per unit in bracket actual yield, that is actual production, minus revised standard production, that is revised standard yield RSY.
right? Now the question is arise that how to find the standard cost per unit. सो फ्रेंड्स स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट को फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला रखना पड़ेगा दैट इज टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन दैट इज एक्चुअल यील्ड और एक्चुअल आउटपुट, राइट? देन RSY, हाउ कैन वी फाइंड द RSY? दैट इज रिवाइज्ड स्टैंडर्ड यील्ड. RSY हम लोग फाइंड कर सकते हैं फ्रेंड्स विद द फॉर्मूला TAQ which is total actual quantity minus standard loss. सो ये फॉर्मूला रख के फ्रेंड्स आप RSY फाइंड कर सकते हैं, राइट? अब एक और चीज़ हमें जो इस फॉर्मूला में दिख रही है वो है RSQ. दैट RSQ कैसे हम हमारे स्टैंडर्ड क्वांटिटी को रिवाइज्ड करें. सो रिवाइज क्वांटिटी फाइंड करने के लिए फ्रेंड्स आपको फॉर्मूला यूज़ करना है दैट इज TAQ मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी. मतलब कि आपकी जो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, राइट, मतलब सॉरी टोटल एक्चुअल क्वांटिटी जो है उसको आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में डिवाइड कर देना है. दिस इज कॉल्ड RSQ. So these are the formula friends which we have to use in this material variances for finding out the material variances, and this way we can find the 6 types of variances. So let's start or let's solve one question on this particular material variances. Yes friends, so this is the question which you can see in your screen, that calculate material variances. Details are given to you that standard and actual both the data are there, right? Quantity is given 200 and 240 kilogram. That means we have decided 200 kg कि हम लोग इसमें 200 किलोग्राम यूज करेंगे. एक्चुअली हमने उसमें 240 किलोग्राम यूज किया. प्राइस हमने डिसाइड किया था कि वो 2 रुपये पे मिल जाएगा मार्केट से, राइट? और एक्चुअली हमने परचेज किया उसको 1.75 रुपीज पे. तो एक्चुअल और स्टैंडर्ड डेटा इन दोनों में आप चेंज देख सकते हो फ्रेंड्स. सो अब इसमें से हम वेरिएंस फाइंड करेंगे, राइट? पॉसिबल हो सके उतने वेरिएंसेस फाइंड करने हैं. इसमें हम लोग कॉस्ट, प्राइस और यूसेज वेरिएंस फाइंड, 3 वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं बिकॉज इसमें मटेरियल का मिक्सचर नहीं है. सो मटेरियल का मिक्सचर नहीं है मतलब हम लोग 3 वेरिएंस ही फाइंड कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दैट. राइट डाउन द फर्स्ट वन दैट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. Friends, the formula for material cost variance is, अभी हमने आगे पढ़ा, that is standard quantity into standard price minus actual quantity into actual price. So इसमें डिटेल पुट अप करते हैं. what is the standard quantity? So बहुत क्लियरली दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर standard quantity is 200 kilogram. The standard price is also given, that is 2 rupees minus actual quantity which is 240 rupees, sorry 40 kilogram, and the price actually we have paid is 1.75. Now friends, the total is 400 minus 420, so the answer is minus 20 rupees unfavorable. फ्रेंड्स दिस इज अनफेवरेबल. अनफेवरेबल मतलब ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, ये हमारे प्रॉफिट पे अफेक्ट कर रहा है, राइट? हमने डिसाइड किया था 400 रुपीज़ का मटेरियल यूज होगा एंड वी हैव यूज द मटेरियल ऑफ 420 रुपीज़. तो 20 रुपये का मटेरियल ज़्यादा गया मतलब हमारी कॉस्ट बढ़ गई. कॉस्ट बढ़ गई तो हमारा प्रॉफिट डाउन जाएगा, राइट? सो दिस मटेरियल इज नॉट फेवरेबल फॉर अस, दिस इज अनफेवरेबल, राइट? सो आंसर के पीछे हम लोग यू लिख देंगे. यू स्टैंड्स फॉर unfavorable. Now the next variance we will find, that is material price variance. Friends, formula for that is actual quantity in bracket standard price minus actual price. So actual quantity यहाँ पे हमने यूज किया है 240 किलोग्राम, राइट? स्टैंडर्ड प्राइस हमने डिसाइड किया था 2 रुपये पे ये गुड्स मिलेगा. We have purchased it at 1.75, so 240 multiplied by 0.25, so the answer is 60 rupees favorable. ये हमारे लिए फेवरेबल है. फेवरेबल क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि हमने डिसाइड किया था 2 रुपीज़ पर केजी पे ये गुड्स मिलेगा और हमें 1.75 रुपीज़ पे मिल गया, मतलब कम प्राइस पे मिल गया, राइट? तो हमारा कॉस्ट वहाँ पे डाउन जा रहा है, राइट? डाउन जा रहा है तो ये हमारे लिए फेवरेबल चीज है, राइट? नाउ गो टू द थर्ड वेरिएंस, दैट इज मटेरियल
usage variance. The formula for this material usage variance is standard price, then standard quantity minus actual quantity. So standard price is given here 2 rupees, standard quantity 200 minus 240. So this 2, it's minus 40, and the final answer is minus 80 rupees unfavorable. ये वापस अनफेवरेबल आया फ्रेंड्स, क्योंकि हमने डिसाइड किया था 200 किलोग्राम और एक्चुअली हमने 240 किलोग्राम को यूज़ किया, मतलब हमारी यूसेज बढ़ गई तो हमारा कॉस्ट बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट डाउन जाएगा. सो दिस इज नॉट फेवरेबल फॉर अस, दैट्स व्हाई वी गॉट अनफेवरेबल. So friends, this way we can find the variances, right? And आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो इसको, right? प्राइस और यूसेज वेरिएंस का अगर आप टोटल करोगे तो आपको प्राइस एंड यूसेज वेरिएंस का टोटल करोगे तो आपको कॉस्ट वेरिएंस जितना आंसर मिलेगा. योर प्राइस वेरिएंस इज 60 रुपीस प्लस and usage variance is minus 80 rupees. इसका टोटल करो, the answer is minus 20. This is our cost variance, right friends? So this way we can find the material variances. Thank you very much for this.